is very angry, irritable remedy, having anger when oblique to answers, that is iota. Means if you ask one question twice, yes, अगर आप गलती से भी रिपीट किसी को कोई सवाल पूछते हैं या फिर उसे फोर्स करते हैं कि भाई ये क्या है, आंसर के लिए जब आप फोर्स करते हैं तो ही बिकम इरिटेबल एंग्री, he throws temper tantrum on him, on you. So he gets angry and very irritated. He will answer, I told you once and I am not going to answer twice with frown on the face. If they are given certain instruction to someone, it has to be followed whether it is office or home. एक बार बोल दिया वो उसी तरह से होना चाहिए, वो हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, यस, सो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो होनी ही चाहिए. एंड नक्सोमिका इज ऑलवेज इन एंगर. उसे कुछ आपको पूछना भी है तो वो गुस्से में ही पूछेगा, कुछ बताना है तो गुस्से में ही बताएगा, आपको इंस्ट्रक्शन भी देना है तो वो गुस्से में ही देगा. दिस इज नक्सोमिका. So it has to be followed. If it is not followed, then he lost his temper. और वो टेम्पर पूरा सामने वाले पे निकल जाता है. Yes, that's why temper tantrum. They don't want anything to be repeated. एक बार बोल दिया वो चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए और वो नेवर रिपीटेड इट. और अगर रिपीट करने का काम पड़ा तो इतना गुस्सा. So they don't want anything to be repeated. They are so much in a hurry, very very positive thinking, business minded people. मतलब वो ये सोचते हैं कि मैं इन्हें समझाने में, सामने वाले को समझाने में, बताने में मेरा टाइम वेस्ट क्यों करूं. माय टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम इज मनी. So they never waste their time. Always positive, always in hurry. हर चीज में बिजनेस, मतलब हर काम, क्योंकि दे आर वर्कोलिक्स, इंडस्ट्रियस. सो हर क्षण, हर मोमेंट्स वो यूज होना ही चाहिए, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए. ऐसा उनका थिंकिंग होता है नक्सोमिका का. They don't like to waste time. Though positive, they are always complaining about health. And because of this workaholic nature, because of tension, anxiety, anger, workload, mental exertion, इसकी वजह से they always be having some physical problems like acidity, sleeplessness, headache, body ache, gastric disturbances, etc. Constipation. So though positive, they are always complaining about health, always having abdominal discomfort. Natromure exactly opposite. Natromure भी अयोटा में आता है, but it is hot. Naxomica is chilly. Naxomica having temper tantrum, but anger has Natromure has anger suppressed. So exactly opposite. Both are avata, AWAT, aorta. But Natromure does not like people to ask about their health. They don't like sympathy. They don't like to tell about his disease to others. But Naxomica loves to tell about his complaint. He always tells us symptoms, tell us
his colleagues, his family members, relatives, friends ना, आज बहुत हेडेक हो रहा है, आज बहुत बॉडी एक हो रहा है, आज बहुत ही एसिडिटी बढ़ गई, एब्डोमिनल बहुत डिस्कम्फर्ट है, ऑलवेज टेल हिज सिम्टम्स। अरे नहीं यार, आज नहीं हो पाएगा, मेरा पेट बराबर नहीं, आज मुझे थोड़ा सा इल फीलिंग हो रहा है। सो दिस इज नक्सोमिका। और ये कुछ नक्सोमिका के पेशेंट इसलिए भी बताते हैं, दिस इज माय एक्सपीरियंस, ये इसलिए भी बताते हैं कि वो जताना चाहते कि आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, यू आर डूइंग यूजलेस वर्क, so I will never support you. This is the thinking of Naksomika. अगर किसी जगह इनको विजिट करने जाना है या फिर कुछ देखने जाना है या फिर कुछ समझाने जाना है, दे विल प्रिपेयर टेलीफोन कि वहां जाने में आने में जो टाइम वेस्ट होगा उससे अच्छा कि 2 मिनट में फोन पे मैं आपको समझा देता हूं, आप उस तरह से कीजिए। दिस इज नक्सोमिका, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी पॉजिटिव and very much having importance of time. So time is money, that's why they are very business minded, money minded peoples. एक तरफ काम, एक तरफ पैसा, तो दोनों को इस तरह से तोलते हैं, कितना काम करना है फिर उससे इतना पैसा आने को ही होना। दिस इज नक्सोमिका। So chilly thirsty, they hate cold air, music, disturbances with constant frown on face because of anger. Frown on face because of anger, irritability and anxiety. This is नक्सोमिका। इसी तरह से चाइना के फेस पे भी फ्रॉन होता है, बट चाइना के फेस पे फ्रॉन होने का कॉजेशन कुछ अलग है। वहां पे टॉर्मेंटिंग फीलिंग होता है, टॉर्मेंटेड फीलिंग होता है, दैट्स व्हाई चाइना हैविंग फ्रॉन ऑन फेस। आर्सेनिक के फेस पे भी फ्रॉन होता है, बट आर्सेनिक के फेस पे फ्रॉन होने की मेन वजह होती है एंजाइटी, कि कैसा होगा, बाप रे अब कैसा होगा, अब क्या करेंगे, एंजाइटी, एंटिसिपेशन। जेल्शिमियम, अर्जेंटिकम नाइट्रिकम आल्सो हैविंग फ्रॉन ऑन हिज फेस। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम फ्रॉन बिकॉज ऑफ एंटिसिपेशन, Gelsemium's frown because of anticipation. So this is the types of frown and causation of frowns. Yes. Naxomika is the first remedy. The person does not like to be disturbed, does not like to be cautioned, does not like to be cautioned twice. This is Naxomika. Other remedies are nitromure, phosphoric acid, arsenic, pulsatilla, colocin, bryonia. Yes. So these are the remedies of iota group. बट नक्सोमिका और नाइट्रोम्योर का डिफरेंस हमने देखा, उसी तरह से नक्सोमिका और फॉस्फोरस में भी कुछ सिमिलैरिटी है तो कुछ अपोजिट सिम्टम्स भी है। दे आर exactly opposite to each other. Both are irritable, both are angry, but phosphoric acid having always weakness, कुछ भी काम करने जाओ तो उनका वीकनेस, टायर्डनेस बीच में आ जाता है, और नक्सोमिका का एंगर बीच में आता है। नक्सोमिका chilly thirsty plus thirstless, acid for chilly thirsty plus thirstless, but Naxomika having desire for repressing things like
coffee, tea, tobacco, stimulant. They want stimulant. And acid force also having a desire for repressing things, but the repressing things like juices, fruit juices, cold drinks, icy cold things. This is the desire for acid force. Arsenic also having irritability, anger when caution. Arsenic also chilly, thirstless, sometimes thirsty also. The arsenic's desire is for hot drink, hot food. So this is the difference between acid force, nitromu, arsenic alone. Yes. So acid force, it is very good remedy for acutes. और इतने फास्ट इसका सिलेक्शन होता है. If you think about acid force, so you have to see iota and the desire for fruits or fruit juices, that is refreshing things. तो ये दो पॉइंट अगर मिल जाते हैं in acutes, you can think about acid force. Then bryonia. Again, bryonia is one of the remedy from iota group. But the most prominent symptom of bryonia in acute condition is every motion brings on acute asthma. Yes, every motion. हम बहुत बार पेशेंट के मुंह से ये सुनते हैं कि थोड़ी सी बात की कि खांसी बढ़ जाती, थोड़ी सी बात की कि ब्रेथलेसनेस हो जाता है, थोड़ा सा चला, 2 स्टेप भी चला ना तो मुझे ब्रेथलेसनेस होता है, खांसी बढ़ जाती है. इवन कभी कभी मैं जोर जोर से सांस भी लेता हूं तो उसके साथ खांसी, मेरी कफ बढ़ जाता है. Not only asthma, but acute pain in body, acute pain in abdomen also increases by motion. So asthmatic patient sleeping in one particular position, थोड़ा सा भी पोजीशन चेंज हुआ, कफ, breathlessness. So that's why the bryonia always like to lie without motion, not moving. Think about bryonia. Even they don't move their eyes also. They want to only lie down. अपने आंखें बंद करेंगे और पड़े रहेंगे. Motionless, listless. This is bryonia. Because they are afraid. Every motion will precipitate an attack of breathlessness, asthma. Business minded person, yes, very much business minded. It is made up from cactus, and आप लोगों को पता है cactus कहाँ आता है? राजस्थान, in desert places, because it wants less of water. So that's why they are very much money minded, business minded. So hot, आप देखो डेजर्ट एरिया से जितने भी प्लांट, एनिमल, इवन ह्यूमंस आते हैं, these peoples are very much business minded, money minded. Yes. So hot ameliorated by hot application, pains are ameliorated by pressure. Yes, I have also seen in bryonia patients like hot tea, hot coffee, even in summer also. इतने hot weather में भी they like hot tea. This is bryonia. Yes.
देन लैकेसिस, एग्रीवेशन ड्यूरिंग स्लीप, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है लैकेसिस का। कोई भी पेशेंट अगर ये कंप्लेंट लेके आता है कि मेरे सब तकलीफें जैसे ही सोता हूं बढ़ जाती है, या फिर जैसे ही उठता हूं मेरी तकलीफें बढ़ जाती है। सो एग्रीवेशन ऑन वेकिंग एंड आफ्टर स्लीप, वर्स बाय टाइट क्लॉथिंग स्पेशली अराउंड नेक, sharp brain, sharp manipulative brain, very much manipulative brain, किसी को कैसे फंसाना, किसी से कैसे काम करवा के लेना, कैसे काम अपना निकलवा के लेना, दिस इज लैकेसिस। सस्पिशियस, jealous and revengeful, Crotalus horridus, this is lackesis, but few drugs from snake groups are given here. Crotalus horridus, it is more business minded. देखो लैकेसिस और क्रोटेलस हॉरिडस में क्या डिफरेंस है? लैकेसिस इट इज मैनिपुलेटिव, सस्पिशियस, jealous and revengeful, having very much sharp brain. But Crotalus horridus, it is more business minded. Crotalus horridus, it is right-sided, Lachesis is left-sided. Crotalus cascavilla, it is more of religious, बहुत ही धार्मिक रिलीजियस पर्सन होता है क्रोटालस कैस्केविला। नाजा, it is chilly, left-sided, having anxiety and conscientiousness. Naja is more of conscientious side. Why? You have seen the cobra in the neck of Dr. Shiva. That's why he become conscientious. Anxiety and conscientious. So he never bite. अगर वो conscientiousness उनमें नहीं होता था तो he will bite everybody. तो भगवान शिवा के गले में वो रहते ही नहीं थे. That's why he become a very conscientious. So elapse, phosphoric elapse, it is a phosphorus type. Elapse, it is right-sided. But why it is like a phosphorus? Because जैसे phosphorus का liking है, phosphorus like cold things, loves for icy thing, उसी तरह से elapse भी desire for cold, love for cold things, love for ice cold things. elapse आपको बर्फ में मिलते हैं, समुंदर में मिलते हैं. यस, सो लाइक्स टू प्ले इन वाटर, loves greenery, artistic aptitude. This is elapse. And centuries, it is very much loves sex, like excessive amount of ornaments. आपने सेंचुरीज को देखा होगा, उनके बॉडी के ऊपर पट्टे पट्टे होते हैं, कलर पट्टे, और वो हमेशा ग्रुप में होते हैं, एक दो नहीं मिलेंगे, आपको बहुत बड़ा ग्रुप सेंचुरीज का मिलेगा. बिकॉज व्हाई? बिकॉज दे लव सेक्स, मल्टीपल सेक्स, मल्टीपल पार्टनर्स. सो लाइक्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑर्नामेंट, इसीलिए उनके बॉडी पे कलरफुल बेल्ट होते हैं. यस, सो दिस इज सेंचुरीज. नाउ द स्टैमोनियम. स्टैमोनियम, clinging for support, frightened look, very much frightened look. इनका चेहरा हमेशा डरेवा लगेगा, चेहरे पे always you will see the fear, fright, perspiration, बहुत ही
anxious face, clinging with clawing. Yes, they cling to father. They claw their face of father. The fear is mixed with anger. So ये जो लोग होते हैं स्टैमोनियम क्लिंगिंग, कोई भी इनके पास गया तो चिपक के बैठेंगे, एकदम चिपक के रहेंगे, हाथ में हाथ क्लॉइंग, एकदम हाथ में हाथ हाथ पकड़ के। आपने देखा होगा बहुत से कपल्स बाइक पे जब आप जाते हैं तो एकदम चिपक के लेडीज पूरा हाथ ऐसा सामने से डाल के बैठेंगी, कंधे पे रखेंगी, है ना, पेट पे रखेंगी, थाई पे रखेंगी, एकदम क्लिंगी। जब रोड से घूमने जाते तो हाथ में हाथ, कंधे पे हाथ। दिस इज क्लिंगिंग, डिजायर फॉर क्लिंगिंग। So they cling to father also. They claw their face of father. बहुत से बच्चे जब सोते हैं तो फादर की गाल पे हाथ रख के सोएंगे, गाल पकड़ के सोएंगे, पेट पे हाथ रख के सोएंगे, चेस्ट पे हाथ रख के सोएंगे. This is clinging. The fear is mixed with anger. Stamonium, it is wild and weird looking face because of frightenedness also. Power, fear overpowering also. That's why they look like weird looking face. They can't bear any closed places because of fear. Closed places, tunnels, subways cannot bear cold. Chilly conscientious. अभी जो घटना हुई टाइटन के लिए, टाइटेनिक पांडुबी जो बर्स्ट हुई, आपने वो उसके पिक्चर्स, उसका वीडियो देखा होगा कि कितना अंदर से वो पैक था, क्लोज था, उसमें कोई सीट नहीं थे, ओनली वो नीचे बैठ के गए थे 5 पीपल्स। तो ऐसे नैरो प्लेस में इसमें स्टैमोनियम रह ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता। यस, सो दिस इज स्टैमोनियम। Yes. So why to, now we will see the, सर आवाज नहीं है, सर आवाज नहीं है। yes. So don't wake others. The group of remedies, that is why to trouble other. The patient thinks about why to trouble others. The remedy group are arsenic, alumina, aurum, chelidonium, digitalis, sorinum, and sulfur. So these are the remedies for asthma when they think about why to trouble others. They never wake up others. And I will be okay tomorrow. This is anticipation. I will be okay tomorrow. That means contented remedies also. So these are opium, magnesium salt, alumina, phosphorus, and sepia. So we will see one by one. The opium. Opium, again,
It is like a lachesis in mind. So very much quick, fast, quick brain people is opium. बट ओपियम का एक ऐसा होता है कि माइंड बहुत शार्प, बहुत क्विक, बट बॉडी इज वेरी स्लो. Mind alert, but body is very slow to move. Alert despite suffering. Even during acute attack of asthma, their mind is sharp. Very, very peculiar symptom of opium. Their mind is very sharp. They feel breathlessness like this, but their mind is sharp. अगर उन्हें तकलीफ हो रही है और वो उठ के पंप ले नहीं सकते, मेडिसिन ले नहीं सकते, और कोई आ रहा है ढूंढ रहा है, तो पट से बता देंगे, वो वहां से वहां पे है, पट से लेके आओ, पट से लेके आओ, वो वहां रखिए, उस डब्बे में, उस कागज पे रखिए, लाइक दिस. सो माइंड इज वेरी शार्प. उनको पता चल जाता है फट से कि इनको क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहे हैं, वो पट से बता देंगे. दिस इज ओपियम. बट फिजिकली वेरी स्लो. वो उठ के मेडिसिन नहीं ले सकेंगे. दैट्स व्हाई माइंड बिकम शार्प. दिस इज ओपियम. एंड वेरी मच कॉन्स्टिपेटेड बिकॉज ऑफ कंटेंडेड नेचर. Magnesium salt. Yes. So again, the whole group of magnesium is contained, very much reserved. सब कुछ आने दो और पूरा अंदर. कभी उसे ओपन अप नहीं करेंगे, कभी किसी को बताएंगे नहीं, सब अंदर दबा के रखते हैं. दिस इज मैग्नीशियम. दैट्स व्हाई दे बिकम ओबेज. देयर फेस इज लार्ज. यहाँ पे ऐसा बड़ा बड़ा दिखेगा, लाइक अ डबल चीन. सो दिस इज मैग्नीशियम. राउंड फेस होता है. हार्मोनी डिजायर. यस, दे ऑलवेज लाइक हार्मोनी. नहीं, घर में कुछ नहीं होना चाहिए, सब लोग शांति से रहने को ना, सब लोग खुश रहने को ना. मुझे मुझे भलाई कितनी भी तकलीफ हो, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता. मुझे ऐसा लगता कि मेरे घर के सब लोग बहुत प्यार से रहे, बहुत खुश रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो. दैट्स वाई मैं किसी को तकलीफ नहीं देता. मैं हमेशा ऑलवेज आई लाइक हार्मोनी इन होम, इन फैमिली, इन रिलेटिव्स, इन फ्रेंड्स, इन ऑफिस. दिस इज मैग्नीशियम. Wants bond with family, always wants. And which bond? Good bond, good relationship is magnesium. So wants bond with family. हमेशा टच में रहना चाहते हैं, हमेशा साथ में रहना चाहती है. यस, कंबाइंड फैमिली होना चाहते हैं. दिस इज मैग्नीशियम. इफ नॉट गेटिंग दैट बॉन्ड, फील्स ऑर्फन. अगर वो उस तरीका से उनको वो बॉन्ड, वो रिलेशनशिप, वो अटैचमेंट नहीं मिली, तो दे फील्स ऑर्फन. मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, इस वर्ल्ड में अकेला हूँ, इस घर में अकेला हूँ, इस दुनिया में अकेला हूँ. दिस इज मैग्नीशियम कंटेंडेड विथ हिमसेल्फ. मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूं, मैं अच्छा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी खुश रहे, और आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं आपको दे दूंगा. दिस इज मैग्नीशियम. अभी अभी 2-4 दिन पहले एक पेशेंट आया था. बहुत ही मतलब ट्रेजेडी वाली हिस्ट्री है उनकी. यंग एज person having 27 age. He is a manager in bank. So बहुत अच्छी बैंक में मैनेजर हैं, नेशनलाइज बैंक में. और उनका जस्ट मैरिज हुआ, और
दैट गाय इज वेरी मच, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर, बहुत ही अच्छा। बाय नेचर ही इज वेरी वेरी गुड पर्सन। उसे किसी चीज की आदत नहीं, कोई शौक नहीं, कुछ नहीं। इवन ही टेल्स मी इन हिस्ट्री कि मैं कभी सोप भी नहीं खाता हूं, और हर दम मैं यही चाहता हूं कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। मैं हर किसी को खुश देखना चाहता, घर में मैं सबकी केयर लेता हूँ, सबको अटैच करके रखता हूँ, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे घर में हमेशा खुशी रहे। हर कोई अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से खुशी से जिए। किसी को भी थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो मैं सबसे पहले उनके तरफ ध्यान दूंगा, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्सन, द नेचर ऑफ दैट पर्सन, वेरी मच काइंड पर्सन, वेरी मच कंटेंटेड अबाउट हिमसेल्फ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूं, मेरा जॉब, मेरा ये, मेरी फैमिली, मैं, मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं, मैं किसी को कुछ बताता नहीं। मुझे कुछ भी हुआ ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उनको क्या हुआ उससे बहुत कंसर्न होता हूं। दिस इज मैग्नीशियम। और जैसे उनकी मैरिज हुई तो वो लड़की भी किसी ऑफिस में जॉब करती थी, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थी। तो एक महीना लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी तरह से गई, बहुत इंजॉयफुल, बहुत खुशी का माहौल घर में। दोनों भी, हस्बैंड वाइफ बहुत खुश, पेरेंट्स खुश, भाई बहन सब खुश, फ्रेंड्स खुश। और अचानक एक दिन दोनों ऑफिस से घर पे आए, तो ऐसे ही बातें करते बैठे तो इन्होंने उस पर्सन ने वाइफ का फोन लिया और ऐसे ही जस्ट देखने लग गया। देखते 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 जैसे ही अंदर गया तो कुछ मैसेजेस आंखों के सामने दिखे। वो मैसेजेस पूरे उन्होंने पढ़े। पढ़ने के बाद फोन रख दिया और बाहर चले गया। बाहर जाने के बाद बहुत सोचता रहा कि मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना अच्छा सबके लिए करता हूं, सबका इतना अच्छा सोचता हूं, आज तक मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को तकलीफ नहीं दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों। उसके वाइफ के जो मैसेजेस थे वो ऑफिस के किसी कलीग को मैसेज थे, तो वो दोनों की मैसेज, एक में के मैसेज पढ़ के ही बिकम वेरी मच डिस्टर्ब कि ये क्या हो गया। अब इतना पता चलने के बाद मैं इस लेडी के साथ कैसे रहूं, और इसको छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मेरी वाइफ है, मैंने उससे शादी किया, और उसको अगर मैं छोड़ दूं तो मेरी वजह से उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। घर में ये बात किसी को बता भी नहीं सकता क्योंकि वो लोग दुखी हो जाएंगे मेरी वजह से, इसलिए मैं उनको भी नहीं बता सकता। किसी फ्रेंड को बताऊं तो वो, उनके नजर में मेरे वाइफ की इमेज कम हो जाएगी, वो लोग फिर मेरे वाइफ की तरफ अलग नजरिया से देखेंगे, इसलिए मैं फ्रेंड्स को भी नहीं बता सकता। सब कुछ अंदर, नेवर ओपन अप, सब कुछ अंदर रख दिया। एक एक दिन उसे एक एक साल के बराबर लगने लग गया, दोनों में क्लैशेस होने लग गए, दोनों की रिलेशनशिप कंप्लीट स्टॉप हो गई। अंदर से एक में को दोनों भी हेट करने लग गए। फिर इसने ऐसा सोचा
एक्चुअल में क्या है, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं। उस पर्सन को मिला, उनसे सब डिटेल लिए कि भाई ये क्या है, ये ऐसा क्यों। फिर कुछ बातें समझ में आई, कुछ समझा के लिए, वाइफ से कुछ समझाया, समझा के लिया कि भाई ऐसा क्यों। फिर धीरे धीरे वो मैटर सॉर्ट आउट किया खुद ने ही, किसी को बताया नहीं, ना पेरेंट्स को ना बताया, ना और किसी को बताया। लेकिन वो जो घटना हुई, दैट वेरी मच बैडली अफेक्ट हिम। और वो था, क्या हो सकता बताइए। क्योंकि ये जब पता चला तो उसके बाद he suffered from severe hemorrhoids. इतना प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, इतना प्रोफ्यूज सिवियर पेन। दैट वाज द शिट कॉन्फ्लिक्ट। ओ शिट, मेरे साथ ये क्या हुआ। मैं इतना अच्छा हुआ और मेरे साथ ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ मेरे साथ। दैट वाज शिट फीलिंग। Yes, and the remedy was Magmure. He was very much contented, very much reserved, and elements from grief, sorrow, elements from grief, deception with, and the medicine that was Magmure. So the single dose of Magmure stops his profuse bleeding at next day. So this is the magnesium group. Yes. Understand magnesium? Yes, sir. Yes. Alumina. Alumina का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. He's a very confused person. Very much confused about him. His identity. मैं क्या हूं यार, मुझे कोई बताए. दिस इज एल्यूमिना. आपने एल्यूमिनियम देखा होगा, ही लुक्स लाइक अ सिल्वर, इसीलिए ही इज कंफ्यूज, मैं सिल्वर हूं कि एल्यूमिनियम हूं. सो डिपेंडेंट ऑन समवन फॉर डिसीजन, है ना. दिखता तो बिल्कुल सिल्वर के जैसा, चमक मेरी सिल्वर के जैसी, फिर मैं सिल्वर क्यों नहीं हूं, व्हाई आई एम एल्यूमिनियम. तो दूसरों को पूछता है कि भाई आप ही बताओ ये क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं क्या हूं, सिल्वर क्यों नहीं हूं. दिस इज डिपेंडेंट ऑन समवन फॉर डिसीजन. आप देखो एल्यूमिनियम बहुत ही माइल्ड दिखेगा, एकदम हल्का दिखेगा, ज्यादा वेट नहीं होता है, सिल्वर के जैसा वेट नहीं होता है ना. एंड कंटेंडेड इन स्पाइट ऑफ बीइंग मेटल. कैसा भी मोड़ो, कुछ भी करो, दिस इज एल्यूमिनियम, वेरी मच माइल्ड and contented. But the main important thing about aluminium is confusion. Yes. Yes. So ये जो
थर्ड पॉइंट है, दिस इज अ एवरीडे अफेयर, रेसिग्नेशन। यस, तो इसे हम कल देखेंगे। मैं आपको एक केस बताता हूं जो 2 days बिफोर मेरे यहाँ एडमिट हुई। दैट केस वाज क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर की ये केस है, एंड when he was came with the symptoms of swelling on both legs, with pain over pain in both extremities, throbbing type of pain, with fever 104, 105 degree Fahrenheit, with chills, with nausea, vomiting, weakness tremendous, and his blood investigation was hemoglobin 11.2, WBC was 14,900, platelet was 90,000, his neutrophils was 83। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी केस है, बहुत अच्छा एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूं, और किस तरह से कैसे मेडिसिन सिलेक्ट करना। यस, तो his platelet was 90,000 and TLC was 14,900, his neutrophil was 83, SGOT, SGPT was normal, but blood urea was 123. Blood urea was 123. Creatinine was 4. Natrum, sodium was 132. It was less, hyponatremia. And potassium was 4. It is also less. Urine contains protein loss. Pus cells was 25. RBCs was present. Epithelial cells was 1 to 2, and bacteria was present in urine. And he is having tremendous pain during the micturition, sticking pain at urethra। जब मैं पेशाब करता हूं तो बोले ऐसा, इतनी जबरदस्त चिड़क निकलती बोले कि ऐसा लगता है कि बस अब मर जाता, इतना खतरनाक पेन and frequency of micturition। The urine was very much offensive yellow color. Sometimes it is reddish. Thustless chili. This was the history. When when I asked his history, but he refused to tell the history. What happened? Nothing happened. All is well. Any quarrel? No quarrel. Any tension in home, in family, in relations? No. There is absolutely normal family, normal life. My assistant take this history. He doesn't like to tell anybody anything about his life, his history, his family members, and having anger means he was asking.
नहीं ना, कुछ नहीं हुआ ना, हमारे यहाँ सब अच्छा है, सब ओके, नो प्रॉब्लम, सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरी ये तकलीफ है, ये अच्छी कर दो, बस फिनिश, ये तकलीफ हो रही है, इसको अच्छा कर दो, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, सब मजे में है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस वॉज द हिस्ट्री। नाउ टेल मी द रेमेडी। यस, एनीवन? Aorta with anger, Naxomika. नक्स ओमेगा। व्हेन आई वाज रेपर्टाइज, नक्स ओमेगा भी उस ग्रुप में था। रेपर्टाइजेशन में नक्स ओमेगा भी रेमेडी आई, बट नक्स ओमेगा मैंने नहीं दिया। यस, एनीवन? बोलिए, टाइम नहीं है अभी, फास्ट बोलिए। Hello, sir. यस। Anger when touch brick. एंगर व्हेन टच? हाँ सर, उससे उसके फैमिली के बारे में किसी से बात किया तो वो एंगर हो रहा है। नो, नो। बट I gave him the saclap, the one dose of saclap, and wait and watch. तो फर्स्ट डे उस मैंने उसे ऑब्जर्व किया, उसके सब पैरामीटर्स देखे, उसका फीवर गोन अप टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, वोमिटिंग, बॉडी एक, हेडेक, nausea, severe burning, stitching, pain. एंड सेकंड डे मैं उसे देखने गया उसके रूम में, और उससे बोला अकेले में, सबको बाहर बैठाया और बोला कि आपको कैसा लग रहा? वो बोले कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तकलीफ बढ़ गई, हेडेक बहुत हो रहा है और पेशाब में पेन तो बहुत ही हो रहा। फिर मैंने पूछा आपको अच्छा होना है? हाँ बोले, इसीलिए तो एडमिट हुए। तो मैंने बोला ऐसे से आप अच्छे नहीं होंगे, आपको अगर अच्छा होना है तो मैं आपको मेडिसिन कैसे दूं, किस बेस पे दूं, कौन सी चीज समझ के दूं? आप कुछ बताने को तैयार नहीं, आप कुछ बता नहीं रहे, और 100% मुझे पता है कि आपके यहाँ कुछ तभी प्रॉब्लम हुआ है, आपके बेटों के साथ, वाइफ के साथ, या फिर कोई रिलेटिव्स के साथ। तो वो प्रॉब्लम मुझे बताओ क्या हुआ, आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरा कोई नहीं? मेरे सब कुछ होने के बाद मेरा कोई नहीं है, मेरे लड़के कोई काम के नहीं, मेरी बीबी कोई काम की नहीं, कोई रिश्तेदार किसी काम का नहीं, ऐसा क्यों लगा? और जो वो बड़ा बड़ा रोने लग गया। मैंने बोला जब तक, फिर बोले ये बता के क्या फायदा डॉक्टर साहब, अब मैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो, बोले उस पर दवा दो। मैंने बोला ऐसा नहीं रहता, हमारी दवा जिस वजह से बीमारी हुई उसके लिए
इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करती है, इसलिए ये आपको तकलीफ क्यों हो रही वो चीज मुझे चाहिए, वो बताएंगे तो मैं आपको अच्छा करूंगा, नहीं तो आप आज ही छुट्टी लेके घर पे चले जाओ। फिर वो बोले कि ये तो चलते ही रहता है डॉक्टर साहब, सबके यहाँ होता है, ऐसा तो होता ही है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मैंने बोला क्या हुआ उतना बता दो, बाकी कुछ मत बोलो। फिर उसने बताया कि मेरा छोटा लड़का मेरे आंग पे मारने को आया। क्यों? तो बोले मैं बाहर कहीं रिश्तेदार के यहाँ गया था, उनके यहाँ कोई संबंध की बात चल रही थी, तो उनके यहाँ गया, वहां से घर पे आया तो मुझे थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा था, तो मैं ऐसे ही खटिया लेके डाल के सो गया। तो उसको ऐसा लगा कि मेरा बाप दारू पी के आया, तो उसने मेरे को गाली दी। बोले मैंने बोला मैं दारू नहीं पिया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं सोया। तो डायरेक्ट मारने को आया बोले आंग पे। मेरे को बहुत बुरा लगा। बोले उस वक्त ऐसा लग रहा था बोले कि कुछ लेके मर जाना। क्या काम किया ऐसी जिंदगी, क्या काम किया ऐसे बेटे जो बाप के ऊपर मारने को आते हैं। सब कुछ फिनिश हुआ ऐसे लगा मुझे, खत्म। बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा भी आया बोले, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया बोले, उसको कुछ नहीं बोला। मैं थोड़ा सा रोया और सो गया। मैंने बोला उस दिन खाना खाए? नहीं बोले खाना भी नहीं खाया, वैसे ही सो गया, किसी से बात नहीं की। और दूसरे दिन बोले मेरे को बहुत ठंडी बच के बुखार आया, पैरों पे स्वेलिंग, पेशाब में जलन। 4 दिन बोले घर में बुखार से पड़ा रहा। फिर लड़के ने आपको फोन किया कि पेशेंट को लाना है और यहाँ लेके आया। दिस वॉज द हिस्ट्री। नाउ टेल मी द rubric and the remedy. Yes, Staphysic area. someone else. Yes, Staphys. Anger, Staphys. anger, indignation. Staphys area. very good, very good, good, excellent. Anger, indignation. अब मेरा काम फिनिश हो गया। अब कल से मैं क्लासेस बंद करने वाला हूँ। यस, अब आप लोगों को सब आने लग गया, अब पढ़ा के कोई फायदा नहीं। So elements from rudeness, elements from anger, vexation, reserved, delusion, insulted. Yes, the remedy was staphysagrina, and the single dose of staphysagrina 200 gives excellent result. Yes, the miracle after staphysagrina was the HB that was become within 2 days 11.8. The TLC 10,900 जो 15,000 था वो 10,000, then platelet 1,05,000 and TLC sorry neutrophils 85, blood urea, the miracle change, blood urea 67, creatinine 4 and the sodium 141 and potassium 3.87, urine clear, protein absent and the pus cells normal, सॉरी पस सेल जो 25 थे वो 12 हो गए, नो बैक्टीरिया। दिस इज द मिरेकल ऑफ स्टैफिसाग्रिया। एंड
patient having the loose motion. The watery stool. Fever completely gone. No fever, patient is febrile. Today's temperature was 96. Headache completely stopped, body completely stopped, nausea completely stopped, but having the loose motion still today, after 2 days. So this is the miracle of step side. This is the miracle of homeopathy. If your similimum is correct, then मिराकल आने को टाइम नहीं लगेगा. यस, मिराकल होने को टाइम नहीं लगेगा, बट यू मस्ट हैव द परफेक्टनेस. ओके, सो लोग बहुत बोलते हैं हिस्ट्री मिलती नहीं, हिस्ट्री मिलती नहीं. हिस्ट्री निकालते आनी चाहिए. हिस्ट्री 100% होती ही है. विदाउट हिस्ट्री नथिंग विल हैपन. यस, सो दिस इज द टुडेज लेक्चर. ओके सर कल के बारे में कुछ पूछना था सर, कल का केस के बारे में, रेटाइनिटिस पिगमेंटोसा के बारे में. कल का केस, कल तो कोई केस हुआ ही नहीं. तो फ्राइडे को जो हुआ था. हाँ सर, उसके जो एम्ब्राग्रेसिया दिया तो उसका डिस्पोजिशन कैसे निकाला सर? शॉर्ट हिस्ट्री थी बिल्कुल, तो डिस्पोजिशन कैसे क्वेश्चन निकाला? किसने पूछा? थोड़ा हैंड राइज कीजिए. यस, रविंदर है. हैंड राइज कीजिए, हैंड राइज. इसमें हैंड राइज का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर. अरे ऐसे कैसे? मैसेज के इसमें जाइए, आप रिएक्शन में जाइए. रिएक्शन. यस, कहाँ से आप? वाराणसी. वाराणसी. तो क्या पूछना है आपको? सर ये पूछना है कि जो एम्ब्राग्रेसिया दिया आपने तो उसका जो डिस्पोजिशन है वो निकाला कैसे सर आपने? यस, तो किसने किसने एक केस देखा उस दिन फ्राइडे को? आप उस दिन नहीं थे क्या? थे सर, लेकिन ओपीडी रहती है ना सर, पेशेंट रहते हैं तो आपका सुन नहीं पाता, फिर यूट्यूब से बाद में देखना. ओके, आप एक बार वो वीडियो पूरा सुन लीजिए. उसमें ईच एंड एवरी आई वाज एक्सप्लेन. नहीं सर, वो मैंने देखा वीडियो, लेकिन जैसे अपन को केस लेना है और जीसीएस देना है तो अपन को पूरा चाइल्डहुड से लेके टीन एज, एडल्टहुड, फिर पूरा विल, इंटेलेक्ट, मोरल, इमोशन सब निकालना पड़ता है. लेकिन आपने उसमें ऐसा कुछ निकाला नहीं. आपने सिंपल सा एक लाइफ हिस्ट्री का एक इंसिडेंस लिया, उसी पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की. तो सर ऐसा तो हमने एक इंसिडेंस नहीं लिया. उसके लाइफ में जितने इंसिडेंट्स हुए अबाउट द लव्ड वंस, वो वही जो कॉन्फ्लिक्ट का इंसिडेंस था केवल वही लिया और बाकी कुछ नहीं. और जो मैडम ने हिस्ट्री बताई उसके अंदर जो प्रॉब्लम हुआ उसे पर्टिकुलरली आंख का, दैट इज द रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वो क्यों होता है रेटिनाइटिस? बिकॉज ऑफ द लव्ड वंस, राइट. उसके साथ कुछ ऐसा डेंजर हुआ जिसको ये देखना नहीं चाहती थी. ये बार बार उसके साथ हो रहा था, डेथ ऑफ द चाइल्ड, राइट. That's why I take the elements from death after death, ठीक है. one after another. Yes. लेकिन जो मैडम ने हिस्ट्री ली थी उसके अंदर तो उन्होंने एक्सट्रोवर्टेड निकाल रखा है कि कंपनी डिजायर है, टॉकेटिव है. आपने सर का मैथमेटिक्स का पढ़ा नहीं? उसके अंदर इंट्रोवर्टेड में दे रखा है सर ने. तो एक्सट्रोवर्टेड है ना वो? इंट्रोवर्टेड नहीं, इंट्रोवर्टेड एम्बैरेसमेंट में दे रखा है. देखो एम्ब्राग्रेसिया कैसा होता है. एम्ब्राग्रेसिया ये ज्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होता है, ज्यादा इंट्रोवर्ट भी नहीं होता है. एम्ब्राग्रेसिया अगर एक कोई टॉपिक पे चला गया ना, तो वो टॉपिक में बार बार क्वेश्चनरीज करता है. इंक्विजिटिवनेस रहता है, इंक्विजिटिवनेस होता है. दिस इज द एम्ब्राग्रेसिया. तो ना वो एक्सट्रोवर्ट होता है ना इंट्रोवर्ट होता है. यस, ठीक है सर. यस, और किसी को? हेलो सर. यस, आज के केस में सर जीसीएस देना पड़ेगा क्या बाद में? यस, जीसीएस देना पड़ेगा. नॉर्मल आने के बाद सब रिपोर्ट. नॉर्मल आने के बाद उसे जीसीएस देना पड़ेगा. एंड आई थिंक ही इज एन एटम वेरी मच सेंसिटिव.
है ना, और इतना रिजर्व, इतना उसे प्रोब करना पड़ा पूछने के लिए, दैट मीन्स ही इज अ नेचुरल. यस. ओके, थैंक यू सर. यस. ओके. सो कैन आई टेक अ लीव? सर अभी ये केस में ये क्रॉनिक किडनी डिजीज वाला केस बोला था ना आपने, जी. ये जो केस था ये क्रॉनिक केस था कि एक्यूट केस था सर ये? दिस इज क्रॉनिक केस. अच्छा, क्रॉनिक केस. क्रॉनिक रिनल फेल्योर. बट जो अभी उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है ना, हाँ. इतना इतना 105 तक उसका टेम्परेचर है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ भी हो सकता है. इसीलिए सबसे पहले हमें उस कंडीशन से बाहर करना है. अगर उसके इतने पस सेल्स है, उसका ब्लड यूरिया इतना बढ़ गया, सोडियम पोटेशियम कम हो गया, तो सबसे पहले हमें उसे इस स्टेज से बाहर करना है, इस कंडीशन से बाहर. यस सर. लाइफ इज इम्पोर्टेंट, राइट? यस सर. सर ये पूछना था जैसे कि अभी कॉजेशन बेस पे हमने उसको मेडिसिन दी स्टैटस एग्रिया, इसके बाद जो हमारा सेकंड प्रिस्क्रिप्शन होगा वो किस बेस पे हम जीसीएस जीसीएस जेनेटिक ट्रेट्स पे. तो वो किसी भी केस का सेकंड प्रिस्क्रिप्शन हमें जीसीएस बेस पे ही निकालना होता है? यस. मतलब अगर हम फर्स्ट टाइम में कॉजेशन बेस्ड मेडिसिन दे रहे हैं और पेशेंट उससे प्रॉपरली रिलीफ हो तो रहा है रिलीफ, लेकिन 80% है, 20% चीजें रुक रही हैं, उसके लिए फिर हमें जीसीएस काउंट करना पड़ेगा? यस. सर अगर समझो ये जो आपने रेमेडी दी है, एक्यूट रेमेडी दी, लेकिन फिर भी पेशेंट अगर इम्प्रूव होते जा रहा है तो भी जीसीएस देना ही है? वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, कुछ दिन तक आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी, फिर धीरे धीरे वापस यूरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो तब हमें देना ही है कॉन्स्टिट्यूशन. सर क्या है नेट्रम? पेशेंट में अगर इम्प्रूवमेंट रहा ही तो फिर भी देना है कि नहीं देना है? वेट एंड वॉच करना है कि? ये हमें अगर पता है कि आगे चल के हमें देना ही है ना, तो थोड़ी देर आप वेट कर सकते हैं, राइट? लेकिन तो आपको सर अगर yes, देना ही पड़ेगा. कॉजेशन बेस पे अभी मेडिसिन हमने जो प्रिस्क्राइब करी है, उसके बाद आप उनके होल मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स लेंगे और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल निकालना पड़ेगा उसके साथ? यस. फिर रूब्रिक कन्वर्ट करने पड़ेंगे, फिर उनको मेडिसिन देनी पड़ेगी? यस. तो सर नेट्रम सर नेट्रम सर डॉक्टर हरिओम बोलिए. सर नेट्रम भी तो हो सकता था जो रूब्रिक आपने बताया, डिलूशन इंसर्टेड एलिमेंट एंगर इंडिग्नेशन रिजर्व और डेड डिजायर. हो सकता था लेकिन नहीं था ना. क्यों सर? चिली थर्स्ट इसकी वजह से काटे सर आप? क्यों? चिली थसलेस था वो, चिली थसलेस. अच्छा अच्छा अच्छा. तो क्या सर नेट्रम आर्स नहीं होता, नेट्रम कार्ब नहीं होता? नो, ये वाज क्योंकि सर नेवर बी नेट्रमार्स. ये चारों ड्रग में जो है स्टेफी नेट्रम नक्स भूमिका कवर कर रहा है. Yes. So he is staphysagrия because of anger suppress. Anger suppress, and the main thing is elements from the rudeness of others and रिएक्शन भी insult बहुत feeling. वायलेंट था ना एंगर के ऊपर, बहुत एक्यूट रिएक्शन दिया उसकी बॉडी ने. Yes. और स्टैफिसाग्रिया का यही मेन है, जो भी घटना होती है वो ऑन दिस स्पॉट कुछ नहीं करता है, राइट? और उसके बाद उसको ही विल सफर फिजिकली. सर स्टैफिसाग्रिया और कोलोसिन में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है एंगर सप्रेशन को लेके. Colocynth is left-sided, Staphysagrия is right-sided. Colocynth is thirsty, Staphysagrия is left-side, thirstless. ओके. Yes. और जितना सेंसिटिव स्टेपिसाग्रिया है रूडनेस के लिए, उतना कोलोसिंथ नहीं है. सर मेंटल डिसीज में सोचता रहता है अपने अंदर वो चीजें सोच सोच के कि ये मेरे साथ क्यों हुआ,
नहीं होना चाहिए इंडिग्नेशन होता है, जी सर। कोलोसिंथ में इंडिग्नेशन होता है, इसमें एंगर वेजेशन होता है, सप्रेस। थैंक यू। मॉर्टिफिकेशन होता है, सप्रेस, स्टेपिसाग्रा में। सर जो केस टेकिंग पढ़ाया जाता है हम लोगों को कि केस जब क्रॉनिक हो जाए तो हमको एलिमेंट फॉर्म नहीं लेना है, मायाजा में ऑलरेडी ब्लूम वो लिखा है सर को उसमें। तो सर कैसे आप पिकअप किए यहाँ, क्योंकि रिस्पांस तो अच्छा है, सब सिम्टम आ ही रहा है। यस, क्योंकि मुझे उसे उस एक्यूट फेज से निकालना था फर्स्ट, राइट। और जो प्रेजेंट है आपके सामने, जो स्ट्रांग दिख रहा है, प्रेजेंट है, सिफिलिटिक है, उसे पिकअप करो। हम उसे जीसीएस नहीं दे रहे हैं, उसे हम स्टेट सिमिलियम दे रहे हैं अभी। सर रूब्रिक क्या? थैंक यू सर। ओके, यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर रूब्रिक्स क्या लिए? थैंक यू सो मच। सर रूब्रिक्स क्या लिए? रूब्रिक तो बताया ना मैंने, कोई तभी चैट बॉक्स में रूब्रिक डाल दो। ओके, यस, ओके, सो सर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।